I'm Professor Shailendra Kumar. I am professor in the Department of Library Information Science, University of Delhi. And previously I was head of the department 3 times and chairman Zakir Hussain College also I was there. I am almost more than 40 years I am in the profession. In these times, I remember in 1985 when the Rajiv Gandhi introduced computer technology in India. That time I was in CSIR in stock, and we received computers for education and training, especially in the information science. That was the beginning of inducting ICT in libraries, and we started using a software which was from UNESCO with the name CDS ISIS. First, we have learned those softwares because we were also not trained. We were not having a direct access to the computers. As soon as we got the computers, we trained ourselves and we learned the software also. And after that, we started training the Indian professionals in the area. And we conducted short-term courses also. Around 26 courses we conducted there. And we also started a new dimensions in the area which is called a matrix studies. In 1987, we have done the matrix studies for CSIR scientists for the Bhatnagar Awards. That was the beginning. And then we established a National Center for Bibliometrics in India. So that was one thing. And in the library automation, there was not much in India because that was the beginning to learn the computers from the professionals itself, those who are having an interest. And I remember that it was the first library, American Central Library, who started automation. They were using a barcode system also, and they were having a ProQuest online databases in the library. And slowly those online databases, they have come to the various places. And in stock also we received the online databases. And there was only 2 or 3 persons, they were trained in using those online databases. So then some of the most important information or CSIR institute or technological institute in India, they were the pioneer in using library technology in India, like BARC, ISRO, National Institute of Technology, so IITs, they started using this. So that's the thing. And then as far as training part is concerned, in library and information science, Delhi University was the first who inducted computer education to the library professionals. And I remember in Gwalior, Jivaji University, their lab was really fantastic. It was that time better than the Delhi University department. But I joined here in 1998, and in 2000 we started creating a lab. My selection was done just to create a ICT facilities, ICT teachings to the students. So we created, that time there was a professor head Kishan Kumar ji, pioneer in the library information science, and Professor S.P. Singh. So we created a lab for the students. We started with the 3 computers, and slowly we developed into 14, and now we are having a 43 computers for our students. See, the main objectives of this conference is first is to really make get together of professionals, those who are having really good things in the library, and as the title is transforming academic libraries. So whenever we think of transforming academic libraries, there are various issues like we must study our history. So the first component, we took a evolution part. And when we study the history, what was the role, what was the vision and trends in the area. And the other part is the innovation. What are the new innovations taking place in this field? Innovation can be in the form of ICT, or innovation can be in the form of web technology. We can make use for the users. That is a center point. And in the innovation also we adopted research data management techniques. So that is the innovation. And the next part, which is a quality. So in the quality we thought of let us adopt, already we are having a standardization.
more of standardization in the quality and more of in the selection criteria. See, whenever we say quality, quality means the best thing in the library, best information resources, best technology. That's why we say, na, this person is this institute has a good quality instrumentation, good quality facilities. So similarly, we wanted to create a good facilities in the library in terms of a quality. And the transfiguration is another component that we are focusing in this library. Transfiguration means something new, a new appearance. So already our academic libraries are there. So we are thinking of having a new appearance of the library, and the new appearance is possible only when you have a new environment in the library in terms of spaces for collection, and spaces for staff, and spaces for users. So a new IT facilities. So that's what we can bring transfiguration, and this require a lot of advocacy, a publicity about your library. One should develop a friends of a library, alumni of the library. And the most important is, when we say advocacy, we need a support from the management, support in terms of rules, regulations, and support in terms of funding. That is a very, very important component. And let me tell you, when we having this conference in Delhi University, our present team, the present Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, he is very actively supporting the library activities, and he has given crores of rupees for the development of the library, so that a new appearance can come. So this is the idea is, and what we are thinking is that we should have really a good policy, which is embodied rules, regulations, recommendation, and we can prepare a good document on it, and it can be used in India also. See, when we are thinking of creating a policy, we are thinking of India first, and we are thinking of, when we say India, it is a multicultural society in terms of education, resources, also multilingual aspect. And we are strictly looking into the NEP also, National Education Policy 2020. So keeping in view those aims given by the government, we are also thinking, let us library should have those things. सर फंड की प्रॉब्लम ज़्यादा सुनने में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि फ़ंड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से फंड्स लेट मिलते हैं या नहीं मिलते या जो भी है, क्या ऐसा मतलब वाजिब नहीं? मेरे विचार से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ंड्स नहीं मिलते। फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका विजुअलाइजेशन क्या है, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप कोई नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, नई चीज़ स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फंड्स की कमी नहीं है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि लाइब्रेरी के लिए, न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए, एडजेसेंट टू द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी, द यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब आपका कहना मतलब एक्टिविटीज़ के नहीं है ना, स्टूडेंट्स रिलेटेड करने में कहीं पे लैक हो रहा है। देखिए क्या होता है कि रूल ये है कि जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, यू हैव टू फॉलो सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स, तो वो तो फाइनेंशियल रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। उसके अंडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस मिला है, उसमें देर आर लॉट्स ऑफ फंड्स गिवन टू द यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग दीज फंड्स टू द डिपार्टमेंट्स to create a facilities. Let me give one example of my department. In Department of Library Information Science, we have created a very nice seminar hall for interacting with the students and asking the expert to come to the department, and we have added a new information technology also in the department. So funds की कमी नहीं है. Sir, I have a question to you. Sir, according to you, what are the indicators of implementation of knowledge management, especially in the academic libraries? See, जब हम knowledge management की बात करते हैं ना, तो knowledge management में सबसे important aspects ये है, हम ये भी बोल सकते हैं knowledge management में, मैं आपको एक example देता हूँ कि हमारे यहाँ एक टीचर आता है और वो टीचर 30 साल नौकरी करता है, और
डे वन से उस टीचर की अगर सैलरी हम लगाते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ और उसको 70,000 रुपीज़ मिल रहे हैं या 80,000 वट एवर इट इज़, एंड द डे ही रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर जब उसको 2 लाख 3 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, अगर आप सारा टोटल अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे ना तो वो कई करोड़ में होगा। और हम ये सोचते हैं कि इतने करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी ने उस इंडिविजुअल को दिया, ठीक है, उसने भी काम किया है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने इंडिया के अंदर प्रोफेशनल्स को ट्रेंड किया, स्टूडेंट्स को डेवलप किया एजुकेशन, लेकिन जो नॉलेज उसने स्टूडेंट्स को दी और वो रिटायर हो गया टीचर, तो जो हमारे 70-80 करोड़ रुपए लगे उस टीचर के ऊपर, वो रिटायरमेंट के बाद वो चले गए सारे। तो हम ऐसा सिस्टम क्यों ना डेवलप करें जिसके अंदर ये सारी नॉलेज हम प्रिजर्व करके रखें और जो अगला टीचर आएगा उस नॉलेज को आगे ऐड ऑन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली पॉलिसी, वी नीड अ नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर जो नॉलेज को मैनेज करें हम, क्योंकि नॉलेज तो ज्ञान तो चला गया टीचर्स के साथ। इसीलिए जो आजकल आईटी आ रहा है, अगर हम वो सारी नॉलेज रिकॉर्डेड करके रखेंगे, देखिए क्या हो रहा है कि कई लोगों के माइंड में ये आता है कि ये मेरा नोट्स है, ये मेरी पीपीटी है, तो मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, ये मेरे साथ जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, इस पीपीटी को क्रिएट करने के लिए, नॉलेज को क्रिएट करने के लिए आपको सैलरी मिली थी, तो ये आपकी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की है, लेट इट बी हियर इन द इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप सारी चीज़ों को ऑनलाइन इस तरह से स्टोर करेंगे तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। So you are focusing on the sharing of knowledge. शेयरिंग ऑफ नॉलेज इन दी ओपन इन्वायरमेंट। Open environment. मैं आपको एक और एग्जांपल But देता sir, हूँ। it will provide a platform for the plagiarism also. नो, इट्स नॉट अ प्लेगरिज्म। सी, प्लेगरिज्म तब आता है जब आप किसी चीज़ को पब्लिश करवा रहे होते हैं। प्लेगरिज्म तब नहीं आता है कि अगर मैं क्लास में नॉलेज दे रहा हूँ किसी को, नॉलेज मैंने भी किसी से सीखी थी, अब मैंने अपने स्टूडेंट को दिया और वो स्टूडेंट आगे नॉलेज को देगा, तो उसमें प्लेगरिज्म का तो सवाल ही नहीं है। हम तो आइडियाज़ को, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। ये तो शुरू से चला आ रहा था, पहले हम बोल के करते थे, अब हम लिख के करते हैं। तो जो ओपन इन्वायरमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो एक रिसर्चर है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोर देन 910 पीएचडी अवार्ड हुई हैं, और उसके अंदर अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 50%, मोर देन 50% पीएचडी को स्कॉलरशिप मिली होगी, और उसमें बहुत से जेआरएफ और एसआरएफ भी होंगे, और जिनको नॉन नेट हैं वो भी लोग होंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो जेआरएफ भी होगा, ऑन एन एवरेज उसको अगर 40,000 रुपीज़ मिलते हैं तो 40 इंटू 12 कितना हो गया, 4,80,000 1 ईयर में, और 5 साल अगर पीएचडी में लगाए हैं तो 20 लाख रुपीज़ हो गया। 20 लाख और 20,000 पर ईयर कंटीजेंसी है, तो 1 लाख और हो गया उसका, 1 लाख और हो गया, तो 22 लाख रुपए लगे पीएचडी करने में। वो 22 लाख रुपए किसके थे? वो मेरे थे, आपके थे, सबके थे, गवर्नमेंट के थे ना, टैक्स मनी थी वो। और वो 22 लाख रुपए की फैसिलिटी हमने रिसर्चर को दी थी। उसने सोसाइटी को क्या दिया है? उसने सोसाइटी को 400 पेजेस और 200 पेजेस का एक बाउंड वॉल्यूम रख दे दिया। ठीक है, उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, राइट? उसकी जो रेलेवेंसी है वो कितनी है? अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ वो 300 बाउंड वॉल्यूम ही है और उसको पीएचडी की डिग्री मिल गई है, तो ये जो रेलेवेंसी है कंट्री के लिए वो क्या थी? तो मेरा मानना ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पर स्ट्रेस किया गया है कि यू शुड मेक अ रिसर्च प्लान। हर डिपार्टमेंट से, हर टीचर का अपने एरिया में रिसर्च प्लान होना चाहिए, जो वो कहे कि मेरे फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट ने मेरे रिसर्च प्लान के एस्पेक्ट को इतना कवर किया, सेकंड स्टूडेंट ने इतना कवर किया, और पूरे डिपार्टमेंट का जाना चाहिए और फैकल्टी का जाना चाहिए और सारी फैकल्टी का मिलकर यूनिवर्सिटी का जाना चाहिए। तो एक रिसर्च प्लान बनना चाहिए पूरी यूनिवर्सिटी का, और जो कि सोसाइटी ओरिएंटेड होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए रिसर्च के अंदर क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग हर बार जो है बाहरी विदेशों से सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, खरीदते हैं, लाइब्रेरी साइंस का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम का हो।
इतना बड़ा आईटी डिपार्टमेंट होने के बाद भी हम उसको खुद डेवलप क्यों नहीं करते? क्योंकि बाद में फिर वो हमारी तरीके से उसको डेवलप करना पड़ता है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें जो आपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात कही है, इसमें गवर्नमेंट की लेवल पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हमारे एरिया में, लाइब्रेरी के एरिया में NIC है, तो NIC का एक सॉफ्टवेयर है ई ग्रंथालय, जो सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज अडॉप्ट करती हैं और उसे और भी लाइब्रेरीज ले रही हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज भी ले रही हैं। एक और सॉफ्टवेयर है सोल, जो कि इन्फ्लुनेट ने बनाया है और वो भी UGC सपोर्टेड प्रोग्राम्स हैं, तो उस लेवल पे हो रहा है। अब मैं आता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी में हमारा कंप्यूटर डिवीज़न है, हमारे IT लोग हैं। अगर वहाँ IT लोग और कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से और यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल से, लाइब्रेरी साइंस के, तो हम भी कोई नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें बार बार उनसे चेंज कराने पड़ते हैं। क्या ये काम हम NIC या नहीं, NIC तो ये लोग तो कर ही रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये भी है, अगर किसी की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दे शुड डेवलप विद इन दिस सिस्टम। हमारे यहाँ इतने अच्छे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कुछ PhD के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो MSc के स्टूडेंट्स थे कंप्यूटर साइंस के, जो MCA वगैरह थे, उनकी हेल्प ली थी अपने यहाँ मॉडल बनाने के लिए। जैसे मैंने एक 2009 में E-लर्निंग का एक मॉडल बनाया था, उसके अंदर हमने हेल्प ली। एक मैट्रिक स्टडीज़ का किया था हमने, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट से हेल्प लिया था हमने। सो वी आर डूइंग।